So, dear students, today's topic is potential energy of a dipole in an external field. What is potential energy of dipole which is kept in external electric field? Now, here in this figure, what you are seeing that a dipole of length 2a is placed in uniform electric field E at its two ends. At its two ends, the charges -2 and +2 are there, and force on charge Q is equal to QE, and force on charge -2 is equal to -QE. Force on charge Q means Q and -2, these are charges on two ends of dipole. At one end, the force is QE, and other end force is -QE. Since both charges are equal in magnitude, therefore these two forces QE and -QE will be equal in magnitude. But since the nature of these two charges are unlike, therefore these forces will act in opposite direction. So QE and -QE are two equal and opposite forces act on the end of dipole. Dipole के एंड पर, दोनों एंड पर, एक एंड पर QE फोर्स और दूसरे एंड पर -QE फोर्स, और ये दोनों फोर्स अब चूंकि टोटल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, नेट फोर्स डाइपोल पे काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हो कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 काम करता है, तो नेट फोर्स तो 0 है। बट अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लेकिन इन दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के एक्शन में, इन दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के अंतर्गत क्या होता है, एक कपल कार्य करने लगता है। यहां पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म ए कपल, और कपल क्या देता है, रोटेशनल इफेक्ट, मीन्स दिस डाइपोल will try to rotate. This dipole will try to rotate because of couple. Now, torque exerted by this couple will be tau is equal to QE into 2a sin theta, that is equal to PE sin theta, where P is Q into 2a. P is Q into 2a. Now, the dipole is here also. One thing is that this dipole has dipole moment P, and dipole moment makes an angle theta with the direction of electric field. Now, if this dipole is rotated through a small angle d theta against this torque, इस torque के against अगर इसको एक स्मॉल एंगल, अभी इस तरह से है, इस तरह से डाइपोल है, एक स्मॉल एंगल पर उसको घुमा रहा है, स्मॉल एंगल डी थीटा पर घुमा रहा है, तब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? व्हाट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू एंगल डी थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी dw is equal to tau d theta. dw is equal to tau d theta. Now, if the dipole is rotated through an angle theta 1 with the direction of electric field to the angle theta 2, means dipole is rotated from angle theta 1 to angle theta 2. Theta 1 and theta 2 are two angles which are with the direction of electric field. मीन अगर मतलब कहने मतलब है कि एक बार ये एंगल थीटा 1 हो जाए और इस डाइपोल को इस तरह से रोटेट करें कि ये एंगल बाद में थीटा 2 हो जाए, ठीक है? तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल?
making an angle theta 1 from its orientation to the field to the angle theta 2. So this total work done will simply be integral dW. Integral dW will be the total work done in rotating dipole through angle from angle theta 1 to angle theta 2. So this will be equal to integral dW, which is equal to integral theta 1 to theta 2 p sin theta d theta. P sin theta d theta, as tau is equal to p sin theta. And by solving this integration, we will get W is equal to P cos theta 1 minus cos theta 2. Now, actually here the work is done against torque. Please remember, work done against force या work done against torque is stored in the form of potential energy. कोई भी वर्क हो, वो अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट किया जा रहा हो या किसी टॉर्क के अगेंस्ट किया जा रहा हो, तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो हियर दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल. सो द पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज Pe cos theta 1 minus cos theta 2. This is the potential energy of the dipole kept in uniform external field. Now, some special cases arise in that. Theta 1 is 90 degree. Means initially the dipole, this dipole, and dipole is like that. Dipole is like that. And this dipole is brought to some angle theta with the direction of electric field. Means dipole is brought in such a way that the direction between vector P and vector E is theta. In that situation, U is equal to cos theta 1 cos 90, cos 90 is 0 minus cos theta 2. Theta is theta, so U is equal to minus P cos theta. U is equal to minus P cos theta. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डायपोल जो है परपेंडिकुलर है और इसको घुमा के हम किसी ओरिएंटेशन थीटा पे ला रहे हैं, जैसे ये ओरिएंटेशन थीटा वाला दिया हुआ है, मतलब ये डायपोल इस तरह से है, अब डायपोल का इस तरह से है जिससे कि ये एंगल थीटा है. पहले ये एंगल कितना है, अभी ये एंगल 90 डिग्री का है. मतलब डायपोल जो है ना, मतलब डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर ई के परपेंडिकुलर है. ठीक है. और अब हम इसको ऐसे घुमा के, डायपोल घुमा के यहाँ थीटा एंगल को ले आए, थीटा एंगल को ले आए, है ना. तो थीटा 1 is 90 डिग्री, थीटा 2 is थीटा. सो इन दैट सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा. ठीक है. अब कुछ स्पेशल केस यहाँ से निकल रहे हैं. मान लो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है cos 0 is equal to 1. In that situation u will be equal to minus P, which is minimum. तो कहने का मतलब क्या है, this dipole will have minimum potential energy when dipole moment vector is parallel to the direction of electric field. Means the potential energy of the system is minimum when vector P and vector E are parallel to each other. This is also the case of stable equilibrium. Stable equilibrium. Now what about theta is equal to 180? When theta is equal to 180 degree, then it will be cos 180, and cos 180 is minus 1. In that case, u is equal to plus p. Minus p into minus 1 plus p means maximum potential energy. Maximum potential energy. So when this dipole will have maximum potential energy, when vector P and vector E are anti-parallel to each other. This is vector P, this is vector E. Here vector P, here the angle between vector P and vector E is theta. And when vector P, when vector P and vector E
will have 180 degree, then it will be rotated like that. Like that. And when vector P and vector E will have 0 degree, then it is being rotated like that. So when theta equal to 180 degree, U will be equal to plus P. When theta equal to 0 degree, U is equal to minus P. Theta equal to 180 degree is the case of unstable equilibrium. So under unstable equilibrium, the dipole will have maximum potential energy, and under stable equilibrium, the dipole will have minimum potential energy. And when dipole will have zero potential energy, when this theta is of 90 degree, cos 90 is equal to 0. Means when the dipole is held in such a way that vector P, the dipole is held in such a way that the angle between vector P and vector E is 90 degree, or when the dipole is held perpendicular to the direction of electric field, then the dipole will have zero potential energy. So this was all about the potential energy of the dipole. So I hope, dear student, this topic will be clear to all of you. If any comment, any feedback, any response, you can ask